Hello students, welcome to MathGet. Today we are going to discuss time and distance topic. In the time and distance, very important topic, train related questions. In the last video we have discussed time and work, and today we are going to discuss the equally important topic as time and work, that is time and distance. In time and distance, very important heading is train related questions. We all know what are the train related questions. We all seen these kind of question on Facebook or whatever on our aptitude test. Okay, so train related question is 100-meter train running at a speed of 50 km per hour. In how many seconds will it pass a pole, and whatever can be the language. So we are going to discuss each and every case of train related question. और मैं आपको ये एश्योर करने वाला हूँ स्टूडेंट्स कि ये ट्रेन का वीडियो देखने के बाद आपको ट्रेन रिलेटेड कोई डाउट नहीं रह जाएगा। काफी बेसिक से हम चीजों को कवर करने वाले हैं, लेकिन जब वीडियो फिनिश हो रहा होगा तो सारे गेट क्वेश्चन हम ट्रेन वाले कवर कर चुके होंगे। नाउ इफ इट टॉक अबाउट ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसके अंदर एक फंडामेंटल फॉर्मूला जो हम सभी को पता है स्टूडेंट्स, वो ये है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। If you know this formula, you don't need to remember any trick or whatever shortcut method. अगर हमें distance equal to speed into time पता है, तो हमें कुछ भी नहीं पता हो तो भी हम काफ़ी easily उन questions को attempt कर सकते हैं और काफ़ी कम सेकंड में कर सकते हैं with fully concepts. तो यहाँ देखते हैं कि सर similarly distance equal to speed into time. So I can say speed equal to distance upon time and time equal to distance upon speed. So this is very simple. And similarly, if we have x kilometer per hour and the question is asking about the speed in meter per second, and so we have to, or either we have to use the speed in meter per second, so just multiply it by 5 by 18 and this kilometer per hour becomes meter per second. Why we are multiplying it by 5 by 18? Because kilometer, in 1 kilometer we have 1000 meter, in 1 hour we have 3600 seconds, so that's why this become meter per second. So finally we have 5 by 18, that's why we are multiplying by 5 by 18. अब स्टूडेंट बात करते हैं कि ट्रेन वाले क्वेश्चन जो बन रहे हैं गेट एग्जाम में, जो ट्रेन वाले क्वेश्चन बन रहे हैं, जो 18 में बनाए, 16 में बनाए, 2 मार्क में क्वेश्चन बने, 14 में भी बनाए, तो उन सभी क्वेश्चन को हम किस अप्रोच से देखें। हम यहाँ 4 केस डिस्कस करने वाले हैं, टोटल 4 केस। उन 4 केस के अलावा और कोई केस नहीं बनता ट्रेन के अंदर कि उससे क्वेश्चन बने। तो अगर आपको 4 केसेस क्लियर होंगे तो आप इजीली किसी भी ट्रेन वाले क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हम पहला केस देखते हैं। इसके अंदर ये फॉर्मूला आप सभी को पता है, इसमें कोई बहुत मेजर बात नहीं है, समझना का ऐसा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं हम पहले केस की, जो हमें ये पता पड़ता है कि when train passes, first case is when train passes a pole, flag or whatever pole flag, stationary man and whatever, ये जो ऑब्जेक्ट है ऐसा ऑब्जेक्ट है जो स्टेशनरी है, पोल, फ्लैग, स्टेशनरी मैन और whatever स्टेशनरी मैन एंड ट्री एज वेल। सो यहाँ हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स कि ऐसा ऑब्जेक्ट को पास कर रही है ट्रेन जिसकी लेंथ को हम कंसीडर नहीं कर सकते और वो एज वेल एज वो स्टेशनरी है, उसकी स्पीड 0 है। तो एक ऐसे ऑब्जेक्ट को ट्रेन पास कर रही है यहाँ जिसकी लेंथ को कंसीडर नहीं किया जा सकता। सो दैट्स व्हाई इन दिस केस डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन एंड स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन ओनली। तो ये हमारा पहला केस कंप्यूटर था। काफी इजी केसेस में डिस्कस करने वाला हूँ। ये पहला केस मैं आपको दे चुका हूँ, 4 केसेस में आपको टोटल देने वाला हूँ। उन सभी 4 केसेस को करने के बाद ये सभी ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए काफी इजी बनकर रह जाएंगे। तो whenever train passes a pole, flag, stationary man or tree, it means whenever train passes that kind of object, the length of which is negligible and that is stationary also, then distance equal to length of train and speed equal to speed of train only. So in the second case, when train passes a platform, bridge and tunnel, प्लेटफॉर्म विद टनल। तो यहां मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि यहां ट्रेन एक ऐसे ऑब्जेक्ट को पास कर रही है
जिसकी लेंथ को हम ट्रेन की कंपेयर में कंसीडर कर सकते हैं, लाइक लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ ब्रिज एंड लेंथ ऑफ टनल कैन बी कंसीडर्ड विद द रेस्पेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन. सो दैट्स व्हाई क्लास इन दिस केस डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ train plus length of platform. Okay, let's discuss why we are taking length of train and why we are taking length of train plus length of train plus length of platform. Let's discuss why we are taking here distance equal to length of train and why we are taking distance equal to length of train plus length of platform in the second case. If we have pole here, a train is running towards the pole. In how many seconds will it pass the pole? So यहां में स्टूडेंट्स ये क्लियर होता है कि टाइम स्टार्ट कब होना है. इन व्हाट टाइम विल इट पास ए पोल? टाइम स्टार्ट कब होना है? व्हेन द फ्रंट ऑफ द ट्रेन इज इन फ्रंट ऑफ द पोल, इज इन फ्रंट ऑफ, whenever the front of the train is in front of that pole. And when time ends, students, when time ends, when the back of the train is in front of the pole. When time ends, students, when the back of the train is in front of the pole. So it is clearly seen to all of us, the train has to travel equal to the length of train to pass a pole. So train has to travel from this point to this point. It means train has to travel equal to length of train to pass a certain pole. Is it clear? That's why we are taking distance equal to length of train in first case. In the second case, when train passes a platform, so let's assume we have platform here. The platform length, the platform first point is A, second point is B. A train is running towards the platform, and in what time will it pass the platform? So यहाँ students टाइम स्टार्ट्स कब होना है? टाइम स्टार्ट्स when the front of train is at point A and when the time ends, students, when the back of train is at point B, is at point B. So class students, जहां आपको ये क्लियर होना चाहिए, to cover the distance from A to B, the train has to travel from A to B and that is equal to nothing but length of platform. From A to B, the train has to travel equal to the length of platform, but to pass the point B, again the train has to travel equal to the length of train. So that's why class in this case distance equal to length of train plus length of platform. Speed in this case we don't have any speed about the platform, bridge or tunnel, so that's why speed equal to speed of train. So आप इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ के देखें स्टूडेंट्स. केवल हमने दो केस डिस्कस कर लिए. व्हेन ट्रेन पासेज ए प्लेटफॉर्म, पोल, फ्लैग और स्टेशनरी मैन और ट्री, डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन. सेकंड केस, व्हेन ट्रेन पासेज ए प्लेटफॉर्म, ब्रिज और टनल, डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म एंड स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन. दो केस हम और डिस्कस करने वाले. उसके बाद सभी गेट क्वेश्चन आप लोग इजीली कर पा रहे होंगे. इतना इजी आपके लिए ट्रेन होने वाला है. नाउ थर्ड केस देखते हैं. व्हेन ट्रेन पासेज, आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके. When train passes, third case is when train passes another train. When train passes another train. When train passes another train. In this case, the distance equal to, distance equal to length of train first plus length of train second, and the speed. When two trains pass each other, they can pass in two ways. First in same direction and the second one is opposite direction. So that's why in same direction the speed will be s1 minus s2. In the 7th or 8th class we have learnt it. Speed in same direction is s1 minus s2 and speed in opposite direction s1 plus s2. We can say relative speed in same direction s1 minus s2 and in opposite direction s1 plus s2. When train passes another train, distance equal to the sum of the length of both the train and speed equal to in same direction subtraction, in opposite direction it is plus. So very easy concept until third concept, when train passes another train. Now we are going to discuss the last thing, when train passes a moving man. So last we are going to discuss the last case, when train passes a moving man. When train passes
Fourth case, when train passes a moving man. When train passes a moving man. If we talk about the when train passes a moving man, तो यहाँ अगेन क्लास आपको रटने का जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ लर्न हो जाएगा, ये चारों कैसे आपको टिप्स पे होंगे, बिकॉज आपको ये ध्यान रखना है whenever we can consider the length of that particular object, like when train passes a platform, the distance equal to length of train plus length of platform, because we can consider the length of platform in front of length of train, that's why we are adding only. Or whenever we cannot assume, we cannot consider the length of man, pole and whatever, so that's why distance equal to length of train in those cases only. So that's why when train passes a moving man, distance equal to length of train and speed in same direction. Again, this is not a stationary man, this is a moving man, so this man must have some speed, so that's why s1 minus s2 in same direction, in opposite direction, s1 plus s2. So these are the four cases. If you know these four cases, you can attempt any question of train with all these four concepts only. Okay? It takes 10 seconds and 15 seconds respectively to pass the telegraph post. The length of first train is 120 meter and that of the train and that of the second train is 150 meter. The magnitude of the difference in the speed of the two trains in meter per second is what? And these are the options: 2 meter per second, 10 meter per second, 12 and 22. तो यहाँ हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि कितना इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा केस है। हमने जो 4 केस अभी डिस्कस किए हैं उसमें से कौन सा केस में अप्लाई हो रहा है। इट टेक्स 10 सेकंड एंड 15 सेकंड टू पास ए टेलीग्राफ पोस्ट। तो आपको ये पता पड़ता है कि सर एक पोल को ये पास कर रही है, इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट केस है। तो if we talk about the first train, we have given the length of first train. The length of first train is 120 meter and the time to pass a pole is nothing but only 10 seconds. So that's why when train passes upon pole, length of train is equal to 120 meter and we all know distance equal to length of train. So for this case, distance equal to 120 meter. For this case, we have time equal to 10 seconds. So can we find the speed here? Yes sir, we can find the speed here by just applying d upon first time equal to 120 upon 10 and the answer is 12 meter per second. This is the speed of first train. For second train, if we talk about the second train, the length of second train is 150 meter and it is also passing a pole. So that's why when train passes a pole, distance equal to length of train in that case. So that's why this length of train second is equal to distance for the second case. And it takes only 10 seconds. It takes 15 seconds to pass the pole. So time second is equal to 15 seconds. So we have distance and we have time for the second case. Can we calculate the speed? Distance upon time equal to speed. So 150 upon 15 equal to 10 meter per second. Equal to 10 meter per second. And the question is asking about what is the difference of the speeds. So we can clearly say S1 minus S2 equal to 12 minus 10 equal to 2 meter per second. So यहाँ हमें पता पड़ता है कि केवल DSOT अप्लाई करके हमको हमारा आंसर इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए होने वाला है करेक्ट ऑप्शन। तो हमने देखा कि कैसे हमने गेट क्वेश्चन, एंड दिस इज ए गेट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क इन द ईयर ऑफ 2016 एंड द ब्रांच वाज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो हमने देखा कि कैसे हमने हमारे फर्स्ट कंसेप्ट से गेट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो मैं आपको यही कॉन्फिडेंस देना चाह रहा हूं कि अगर आपको ये चारों केस क्लियर है तो आप इजीली किसी भी गेट क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि गेट 2014 में पूछा गया है, 2 मार्क्स एंड द ब्रांच वाज इसी। A train that is 280 meter long, traveling at a uniform speed, crosses a platform in 60 seconds and passes a man standing on the platform in 20 seconds. What is the length of the platform in meters? Now, अगर ये क्वेश्चन में करना है स्टूडेंट्स तो ट्रेन वाले क्वेश्चंस को आप काफी ध्यान से पढ़ें।
तो इसके अंदर दो केस बन रहे हैं. इन द फर्स्ट केस ट्रेन passes a platform and in the second case train passes a standing man as well. A standing man as well. So that's why हमें पता पड़ता है सर जहाँ दो केस यूज हमें लेने पड़ेंगे. पहला हमारा सेकंड केस when train passes a platform, then first case when train passes a stationary man. तो यहाँ बात करें सॉल्यूशन की अगर, तो स्टूडेंट्स आप कहेंगे when train passes a platform distance equal to length of train plus length of platform. So यहाँ आपको पता पड़ता है कि distance equal to length of platform plus 280 meter, because we all know when train passes a platform distance equal to sum of the length of platform plus length of train, and we have given time for this that is equal to 60 seconds. अब ये क्लियर होता है सर कि एक d हमारे पास है, t हमारे पास है, और इन दिस केस स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन एज वेल. अगर कहीं से मुझे स्पीड ऑफ ट्रेन मिल गई तो मैं d इक्वल टू s इंटू टी अप्लाई करके उसको वैल्यू पुट करके आराम से लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकाल सकता हूँ. तो इसीलिए जो फर्स्ट लाइन से यहाँ तक जो हम कर सकते थे हम कर चुके स्टूडेंट्स. इस लाइन को जो फर्स्ट थ्री लाइन जो लिखा है क्वेश्चन में वहां तक जो हमको पढ़ के कर सकते थे क्वेश्चन के साथ वो हमने कर लिया है. नाउ रीड द रिमेनिंग क्वेश्चन. एंड passes a man standing on the platform in 20 seconds. यहाँ स्टूडेंट्स सेकंड केस अप्लाई, सॉरी हमारा फर्स्ट केस अप्लाई हो रहा है. when train passes a stationary man, and when train passes a stationary man, what is distance? Sir, in that case distance equal to length of train, and that is equal to nothing but 280 meter. It takes how much time? It takes 20 seconds. So in this case distance, and we have distance and time, and can we find the speed? Sir, when train passes a standing man, the speed in that case must be equal to speed of train. So that's why speed of train equal to speed in this case 280 upon 20. Answer is 14 meter per second. 14 meter per second is the speed of train. If I put the speed of train here, then I have 14 meter per second here, because that is the same train, and that train also running with a uniform speed. It is clearly mentioned in the question. It is moving with the uniform speed. So that's why now we have D, S and T. और ये क्लास मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा है, अगर आपको D, S and T आता है तो बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप 100% उस क्वेश्चन को कर सकते हैं. So I can apply here distance equal to speed into time, length of platform plus 280 meter, the distance equal to speed into time, 14 into 60, length of platform plus 280 meter equal to 14 6 are 840, and the length of platform is equal to 840 minus 280, 560 meter, and it is a gate question for 2 mark in the year of GATE 2014 and the branch was EC. तो हमें ये पता पड़ा कि अगर सर वो दोनों केस में फर्स्ट और सेकंड केस अगर क्लियर है तो हम इजीली इस क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हैं. हमने एक बार DSNT यहाँ अप्लाई किया है और एक बार DSNT यहाँ अप्लाई किया है, और DSNT हमने फर्स्ट क्लास 6th और 7th क्लास में अप्लाई किया था. तो वो 6th और 7th क्लास के कंसेप्ट से हम गेट में 2 मार्क का क्वेश्चन काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं. आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन जो इन्हीं कंसेप्ट पे पूछा गया है और गेट 2018 में पूछा गया है. आइए देखते हैं वो क्वेश्चन. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम द टाइम द फ्रंट ऑफ ए ट्रेन एंटर्स ए प्लेटफॉर्म इट टेक्स 25 सेकंड्स फॉर द बैक ऑफ द ट्रेन टू लीव द प्लेटफॉर्म. अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको लेंथी किया गया है ना. देखो यहां तक जो ये 4 लाइन्स हमने देखा है, इन 4 लाइन्स का एक ही मतलब निकल रहा है, द ट्रेन पासेज ए प्लेटफॉर्म इन 25 सेकंड्स. अब इस क्वेश्चन को लेंथी किया गया है ताकि आपको देखने में हॉरिबल क्वेश्चन लगे, ऐसा लगे कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व हो पाएगा. लेकिन आप जहां तक अगर फर्स्ट 4 लाइन को पढ़ेंगे तो पता पड़ेगा कि फर्स्ट 4 लाइन का एक ही मतलब निकल रहा है, द ट्रेन पासेज ए प्लेटफॉर्म इन 25 सेकंड्स. While traveling at a constant speed of 54 km per hour, at the same speed, it takes 14 seconds to pass a man running at 9 km per hour in the same direction as the train. What is the length of train and that of the platform in meters respectively? और आपको ऑप्शंस गिवन है स्टूडेंट्स, 210 plus 140 meter and 140 meter, 162.5 and 187.5 meter, 245 and 130 meter and 175 and 200 meter.
आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। सर पहली बात तुमको ये पता पड़ा कि दो केस यहाँ कंसीडर करने पड़ेंगे। फर्स्ट तो व्हेन ट्रेन पासेस ए प्लेटफॉर्म एंड द सेकंड वन इज व्हेन ट्रेन पासेस ए मूविंग मैन। सो व्हेन ट्रेन पासेस ए प्लेटफॉर्म व्हाट इज द डिस्टेंस? सर डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। सो फॉर दिस केस वी हैव द टाइम इक्वल टू 25 seconds. Time equal to 25 seconds. And when train passes a platform, speed equal to speed of train, and that is 54 km/h. But we have to change it in meter per second because our time is in seconds, and all the options are in meter as well. So that's why we have to change it in meter per second. So 54 into 5/18, it is equal to 15 meter per second. For this case, we have speed and we have time. We have speed and we have time. Can we calculate the distance? Yes, sir, we can. Of course, we can find the distance. Distance equal to speed into time. So you will say 25 into 15, and that is 375 meter. तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमें कोई हार्ड कंसेप्ट डिस्कस नहीं किया है. We are only standing on distance equal to speed into time only. Now, if we talk about the remaining question. While delivering at a constant speed at 54 km/h, at the same speed, in the second case, speed is equal to 15 meter per second as well. It takes 14 seconds to pass a man running at 9 km/h in the same direction as the train is going. What is the length of train and whatever question? Now, in the second case, the train is passing a moving man. So in that case, distance equal to length of train, and for that case we have speed because two objects are moving in same direction. So rate speed must be 54 minus 9 s1 minus s2 equal to 45 km/h. But we have to change it in meter per second. So 45 into 5/18, 5 times and 2 times. Answer is nothing but 25/2 meter per second is the speed of the rate speed when train passes a moving man in the same direction. And we have time as well. For this case we have time that is equal to 14 seconds. That is equal to 14 seconds. Speed equal to 25/2 and time equal to 14 seconds. If somehow I can find the distance in this case, that distance will be equal to length of train only. So that's why distance equal to 25/2 into 14, 7 times. Answer is what? 175 meter. So here we can say distance equal to 175 meter, and that is equal to length of train. So our length of train is nothing but 175 meter. So here we can check the options as well. We have only one option in which we have 175. So this option is correct. But please solve it, fully solve. Now, distance equal to length of train plus length of platform. In this case, this 375 represent what? Distance equal to length of train plus length of platform must be equal to 375, because when train passes a platform, distance represent the length of train and length of platform. That's why this distance is representing sum of the length of train and sum of the length of train and platform. So we will put the value of LT, length of train, that is 175 plus length of platform equal to 375. So length of platform will be 200 meter. So here we can clearly see we are applying only distance equal to speed into time formula, and we are able to do all the gate question based on the train topic. And this is a gate question for 2 marks, and this is a gate question for 2 marks in the year of 2018. In the year of 2018, and the branch was mechanical engineering. So हमें ये पता पड़ता है स्टूडेंट्स कि कैसे हम इजीली कंसेप्ट से इन चीज़ों को कर सकते हैं। और मैं आपको ये अश्योर करता हूँ कि चारों केस आपको क्लियर है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ बताएं कि आपको कोई डाउट अगर आ रहा है तो आप वहाँ जरूर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।